The city was still under the veil of slumber as I reached Pune. With the guidance of Vikash, we started our quest for coexistence around Bhigwan. अलबेला साजन आया रे अलबेला साजन आया अलबेला साजन आया रे एरी सक मन अति सुख पायो रे एरी सक मन We left the Kanipnath temple with Vikas guiding us into the open grasslands far, far from the urban jungle. Along the road, he spoke about the vast biodiversity present in this area. These fields are grown not for harvest but to feed birds like the vernal hanging parrot, strengthening the bond between people and wildlife. हाँ, और ये इस तरीके का जो हार्मनी आपने बनाया है एक्चुअली ये इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलता है। बर्ड्स तो पहले से आते हैं बट स्पॉट मैंने 7 साल पहले किया, पहले मालूम नहीं था, इतना ये नहीं था। अभी इधर बहुत स्पीसीज है, मतलब मिलेट के एक ही मिलेट के ऊपर कम से कम 10-15 स्पीसीज आती है खाने के लिए। आजू बाजू 111 स्पीसीज स्पॉट किए सिर्फ मानसून में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे तरीके से आपने मेंटेन किया है इसको बरकरार। ऑर्गेनिक है ना मेरा, मतलब पूरा, इसीलिए। अच्छा अच्छा। ऑर्गेनिक रहता है ना तो बर्ड्स जो अगर हम पेस्टिसाइड करेंगे ना इसके ऊपर के कैटरपिलर और कीड़े सब मर जाएंगे, तो वो खाने के लिए बाकी दूसरे बर्ड्स नहीं आएंगे, इसीलिए ऑर्गेनिक रखना पड़ता है। तो उससे वो बर्ड का फीडिंग साइकिल भी चलता रहता है। We moved from the farmland of coexistence to the open field of Bhigwan. While I was busy, Vikas was found having a chat with the locals. We discussed about the cropping pattern and how these crops creates perfect habitat for these wildlife. वेगन वाइल्ड लाईफ म्हणून नाव आहे। बरोबर, कुंभरगाव पलीकडे आहे। यहाँ जो गाड़ी वाला आता है आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं होता है, कुछ परेशानी नहीं होता है? गाडीवाल्यांपासून काय तुम्हाला त्रास आहे का? काय नाही त्रास, कुछ नहीं। और ये यहाँ का जो लोकल जो आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है ये पंछी मारता उड़ता नहीं है कुछ? किती लोक पक्षी वगैरे काय त्रास देत का पक्ष्यांना? काय नाही कुछ नहीं। तो खेत में आप लोग जो पेस्टिसाइड वगैरह देते हैं, मतलब वो कीटनाशक, उससे कोई नुकसान नहीं होता है? नहीं होता। नाही। क्या क्या फसल उगाते हैं मेनली? काय काय रानात लावता? रानात काय लावतो? डाळिंब लावतो, मका, ऊस, मका, काय माळवे, कडधान्य, काय अच्छा, बाजरी ही असते ना। लागी लगन भक्ति सकीर्तन, लागी लगन भक्ति सकीर्तन, परम सुखाति आनंदन, परम सुखाति आनंदन, लागी लगन भक्ति सकीर्तन, लागी लगन भक्ति सकीर्तन, लागे लगन भक्ति सकीर्तन, लागे लगन भक्ति The Karwanbadi grassland has a more rugged look, and this place is perfect for the chinkaras, wolves, and Indian foxes.
In the stillness of the wild, every life has its own story. Cautious, hidden, waiting for the right moment. In the golden light, we bid farewell to this world of wings and whispers. Every call, every flutter, a memory carried into the dusk.